हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 8 चल रहा था, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। दिस इज़ पार्ट 3 ऑफ 3, लास्ट पार्ट है। सो इससे पहले हमने 2 पार्ट्स में क्या क्या डिस्कस कर लिया, ए सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, और सेकंड नंबर पार्ट में हमने रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखा था, राइट। सो दिस इज़ द थर्ड पार्ट इन विच वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके अलावा सेक्सुअल हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। सो प्यूबर्टी वगैरह डिटेल आएगी। सो विल स्टार्ट आवर डिस्कशन विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स, राइट। सी ह्यूमन बींग्स में रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन होता है ह्यूमन बींग्स में, और इसमें सेक्सुअल मैचुरेशन की ज़रूरत होती है, राइट। यानी कि वो एक टाइम, वो एक फेज़ जब गेमेट्स प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी के अंदर, राइट। तो जब गेमेट्स प्रोडक्शन होने लगता है बॉडी में, दैट सर्टेन एज इज़ नोन एज प्यूबर्टी, ठीक है, जिसे कहते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, राइट, सेक्सुअल मैच्योरिटी। तो सेक्सुअल मैच्योरिटी के टाइम को या इवेंट को क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी। उस टाइम पे क्या होने लगता है, जब सेल्स प्रोडक्शन होने लगता है बॉडीज़ के अंदर, राइट। ह्यूमन बींग्स हैव वेल डेवलप्ड मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स इन डिफरेंट बॉडीज़। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कोई एक होगा किसी एक बॉडी में, और ऐसी बॉडी को यूनिसेक्सुअल बॉडी कहते हैं, राइट। यूनिसेक्सुअल बॉडी का मतलब है ईदर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज प्रेजेंट। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ टेस्टिस, वास डिफरेंट सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस। तो ये सब किस में आते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं ये। टेस्टिस इज द मेन पार्ट, राइट, बिकॉज टेस्टिस इज responsible for two activities, to production of two main things. The production of two main things is the production of testosterone, which is male hormone, and the production of sperms, right. Sperms and testosterone both are produced by testis, right. Vas deferens, seminal vesicles, prostate gland, urethra and penis, these are the other things which are in reproductive system, right, male reproductive system. तो formation of male gamete takes place in testis, right. I have told you a pair of testes are located inside scrotum situated outside the abdominal cavity. Scrotum is a pouch-like structure in which testes are located. Testes किस में होते हैं, scrotum में होते हैं। scrotum में क्यों होते हैं abdominal cavity के बाहर। abdominal cavity में क्यों नहीं होते, because abdominal cavity में temperature ज़्यादा होता है, right. एब्डोमिनल कैविटी या बॉडी टेम्परेचर का जो बॉडी का टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा होता है फॉर द प्रोडक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ स्पर्म्स, राइट। तो स्पर्म्स के प्रोडक्शन के लिए थोड़ा रिलेटिवली लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है। तो जो रिलेटिवली लो टेम्परेचर रिक्वायर्ड है, ठीक है, उसकी वजह से ये टेस्टिस कहाँ है, बॉडी के बाहर है, राइट। A pair of testes are located inside scrotum outside the abdominal cavity. It is meant to cap relatively a lower temperature needed for the production of sperms by testes. So it is why outside the abdominal cavity, it is outside the abdominal cavity to keep temperature a bit lower than the body temperature. So also testis release a male sex hormone called testosterone, whose function is to regulate the production of sperms and brings changes in appearance seen in boy at the time of puberty. So testosterone is a male hormone, right, which is released by testis, and what is its function? Its function is to regulate the production of sperms. If testosterone level is high, then the production of sperms is also high, right. So testosterone is responsible for production of sperms, not production of sperms directly. It is responsible to regulate the production of sperms. टेस्टोस्टेरोन के लेवल कम ज़्यादा होने पे स्पर्म्स के प्रोडक्शन का लेवल भी कम ज़्यादा होता है, राइट। और क्या होता है, और ये प्यूबर्टी के टाइम जो चेंजेस आते हैं उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइक ग्रोथ ऑफ बियर्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ग्रोथ ऑफ हेयर्स ऑन चेस्ट इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, आवाज़ के भारी होने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। और जो भी मेल कैरेक्टर्स हैं ना, वो सारे के सारे जो भी बॉडी पे अपेयर होते हैं प्यूबर्टी के दौरान, उनके लिए क्या है, टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है।
ठीक. द स्पर्म्स अलॉन्ग विद द सिक्रीशन ऑफ पोस्टेड ग्लैंड एंड सेमिनल वेसिकल टुगेदर कंस्टिट्यूट सीमेन. तो जो स्पर्म्स रिलीज होते हैं, ठीक है, वो टेस्टिस से, राइट, और प्रोड्यूस होते हैं टेस्टिस से, और पोस्टेड ग्लैंड और सेमिनल वेसिकल, ये दो पार्ट्स और होते हैं, राइट, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में. आपको फिगर में दिख जाएगा. फिगर के अंदर यहाँ पे ये पोस्टेड ग्लैंड है. दिस इज़ द पोस्टेड ग्लैंड, this is posted gland, and this is the seminal vesicle, right. These are the two here present, right, these are present here. So these are posted gland and seminal vesicle. So secretions of these two, right, are present in semen. So semen constitute what? Semen constitute sperms. Semen constitute the secretion of seminal vesicles, and semen constitutes the secretions of posted gland, right. So ये तीनों चीज़ों को मिला के जो बनता है वो सीमेन बनता है, ठीक. तो ये ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ड्यूरिंग कोपुलेशन और ड्यूरिंग मीटिंग, what happens, the ejaculation from male is containing all these three, right, is containing semen actually. All these three are just injected or released into the female body, right. So then what happens, फीमेल जर्म सेल्स जो होते हैं, जिन्हें एग सेल्स भी बोलते हैं या ओवम भी बोलते हैं, वो कहाँ पे बनते हैं? ओवरीज में बनते हैं, राइट. ओवरीज आर द टू प्राइमरी मेन पार्ट्स, राइट. सो ओवरीज, जैसे हमारे मेल्स में टेस्टिस होते हैं, वैसे फीमेल्स में ओवरीज होती हैं, ठीक है. ये क्या है? प्राइमरी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक. तो ए पेयर ऑफ विच इज़ लोकेटेड ऑन बोथ साइड्स ऑफ एब्डोमेन, दोनों साइड्स में होते हैं, एब्डोमेन के अंदर होते हैं, राइट. तो व्हेन अ गर्ल इज बॉर्न, द ओवरीज ऑलरेडी कंटेन थाउजेंड्स ऑफ इमेच्योर एग्स, राइट. तो पैदाइश के टाइम ही ओवरीज होती हैं, और पैदाइश के टाइम ही उनके पास बहुत सारे इमेच्योर एग्स होते हैं. इमेच्योर मतलब जो बिल्कुल भी मैच्योर नहीं है, जो अभी रेडी नहीं है, राइट. सो ऑल एट द प्यूबर्टी सम ऑफ दीज एग्स स्टार्ट मैच्योरिंग, ठीक. प्यूबर्टी पे ये एग्स मैच्योर होना स्टार्ट हो जाते हैं. वन एग इज प्रोड्यूस्ड एवरी मंथ बाय वन ऑफ द ओवरीज, ठीक है. हर ओवरी से एक एग सेल रिलीज होता है, ठीक है. एक ऑल्टरनेट चलता है, नहीं एक मंथ एक ओवरी से हुआ है तो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट दूसरी ओवरी से होगा. सो द रिलीजिंग ऑफ दिस ओवम इज नोन एज ओव्यूलेशन, राइट. द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग ऑफ ओवा फ्रॉम ovary into fallopian tube is known as ovulation. So ovulation process से ये ovaries से क्या रिलीज होते हैं? एग सेल्स रिलीज होते हैं. So egg is carried from the ovary to womb through a fallopian tube. fallopian tube से वो कहाँ आते हैं? वो आते हैं ovary से यूट्रस में, ठीक है. यूट्रस opens into the vagina through the cervix. Fertilization occurs in the fallopian tube of female genital tract. The fertilized egg, also called zygote, that is diploid cell, gets implanted in the lining of the uterus and start dividing. What happens when sperms just fuses with a ovum? Then it forms a zygote, right. Zygote is what? Zygote is a diploid cell. It is having 46 number of chromosomes, 23 from male and 23 from female. 23 male chromosomes are present in sperm, and 23 female chromosomes are present in ovum. So the combination of these two results in the diploid cell, right, which is zygote. And then after cell division it converts into an embryo. I think it's clear. So where fertilization takes place? Fertilization takes place in fallopian tube. And what happens if fertilization doesn't take place? If suppose there is no intercourse, if there is no sperm which is used to fertilize the egg cell, then what will happen then? Then in that case, if no fertilization takes place, then ovum just comes on the lining of uterus, and then it breaks the vesicles and the blood vessels which are present in the soft inner lining of uterus, and then it just damages all the blood vessels.
in order to release all the blood which is filled in the inner lining of uterus, which was kept for holding a fertilized egg, which was kept for holding a zygote, right? Implantation takes place after fertilization. If fertilization happens, then that fertilized egg gets implanted on the inner lining of uterus, and that implantation takes place only if that fertilized egg resides in uterus little bit longer, right? तो जब वो जो फर्टिलाइज एग है यूट्रस के अंदर रहता है तो इनर लाइनिंग के अंदर वो क्या करता है, इम्प्लांटेशन हो जाता है उसका, राइट? तो फॉर होल्डिंग दैट फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस जस्ट प्रिपेयर्स इट सेल्फ थ्रू आउट द मंथ एंड इट कलेक्ट्स ऑल द ब्लड इन द इनर लाइनिंग टू मेक इट सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी. If there is no fertilization, then what happens, just ovum just comes on the inner lining. Ovum just comes from the inner lining of uterus, then it breaks all the blood vessels in order to release all the collected blood through the path of vagina, right? So that flow of blood is known as menstrual flow or menstrual blood. Uterus is richly supplied with blood to nourish the growing embryo. In case fertilization does not occur and zygote is not formed, the inner wall of uterus breaks, which causes bleeding, and the released egg along with the thickened lining of the uterus is shed out through the vagina, right? This process is known as menstruation. It occurs at a regular interval of 28 days. If the egg cell or ovum gets in touch with the sperm and zygote is formed after fertilization, then this zygote divides, the embryo is formed, right? The zygote is converted into embryo after cell division, right? And that cell division is a kind of mitotic cell division, right? This embryo is implanted into the uterus with a special tissue known as placenta, right? The tissue, the part of the uterus where the embryo is implanted is known as placenta, right? Placenta is the main part where the attachment of umbilical cord take place in the uterus, right? Umbilical cord is the connection or tubular like structure which connects the fetus with uterus, I think, right? So also the embryo gets nutrition from the mother's blood with the help of placenta. It provides a larger surface area for glucose and oxygen to pass from the mother to the embryo. It provides a larger surface area for glucose and oxygen to pass from mother to the embryo. माँ से जो embryo में या बच्चे में या fetus में जो ऑक्सीजन आता है, जो ब्लड ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, ग्लूकोज रिच ब्लड आता है, वो कहाँ से आता है, राइट? वो इस प्लेसेंटा से आता है. तो इसका काम होता है सरफेस एरिया को इंक्रीज करना. सिमिलरली द वेस्ट फ्रॉम डेवलपिंग एम्ब्रियो आर रिमूव टू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा. और इसी तरीके से जो वेस्ट होता है जो एम्ब्रियो डेवलप करता है, राइट, तो दैट वेस्ट इज ऑल्सो टू बी रिमूव्ड एंड दैट इज रिमूव टू मदर्स ब्लड थ्रू प्लेसेंटा, राइट. After 9 months or 36 weeks of development inside mother's womb, the child is born as a result of rhythmic contractions of the muscles in the uterus. The rhythmic contraction or expansion, that rhythmic contraction or expansion result in the delivery of a child after 9th month. The period of 9 months is known as gestation period, right? That period of 9 months during which the fetus resides in the mother's womb is known as gestation period. And the sexual cycle in a woman continues up to the age of 45 to 50 years, right? 45 to 50 years तक this cycle चलती रहती है, and after that, this particular age, this cycle stops, right? After that, this age, ovary do not release any egg cells. So this stage is known as menopause. It also marks the end of menstruation in the woman. Then the blood flow in each 28-day cycle is stops, right? No more blood flow takes place after 45 to 50 years of age in every human female, right? Now see, what is reproductive health? Reproductive health means a total well-being in all reproductive aspects: physical, emotional, social and behavioral. So reproductive health में क्या आएगा? रिप्रोडक्टिव हेल्थ में रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड, रिप्रोडक्टिव एस्पेक्ट्स से रिलेटेड
हर तरीके की जो वेल बीइंग है वो आती है, राइट। फिजिकल के अलावा इमोशनल भी हो सकती है। इमोशनल, हाउ हाउ इमोशनल इज emotional well-being is responsible or necessary for reproductive health. How emotional well-being is considered as a part of reproductive health. See, in reproduction, what happens? In reproduction, intercourse, mating, or copulation is required, and if a person is not emotionally fit or well, then he will not cooperate in the process, or he or she will not cooperate in the process. So the cooperation in the process of copulation is very much required for the production, for the process of reproduction. So emotional well-being is also responsible, it is also necessary. सी फिज़िकल वेलबींग भी नेसेसरी है। फिज़िकल वेलबींग के अंदर क्या होता है, किसी भी टाइप की सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होनी चाहिए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ बहुत टाइप की होती हैं, ठीक है। इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। सो ये सारे जो है क्या कहते हैं यूटीआईज, और क्या कहते हैं और यूटीआई मतलब यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जैसे एसटीडी मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। सो ये सारे इन्फेक्शंस और डिजीज़ नहीं होनी चाहिए, तो वो आएगा किसमें, फिज़िकल वेलबींग में। जैसे एड्स भी है, एड्स भी क्या कहते हैं, क्या है, एक डिजीज़ है, एसटीडी है, राइट। सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए ये सभी ज़रूरी है। फिज़िकल वेलबींग भी ज़रूरी है, इमोशनल वेलबींग भी ज़रूरी है, सोशल एंड बिहेवियर वेलबींग भी ज़रूरी है। तो कॉन्ट्रासेप्शन देखते हैं, किसे कहते हैं कॉन्ट्रासेप्शन। इट इज़ द अवॉइडेंस ऑफ प्रेगनेंसी। इट कैन बी अचीव्ड बाय द फॉलोइंग वे और मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। तो अवॉइड करना, प्रेगनेंसी को रोकना, अवॉइड करना, इस कॉन्ट्रासेप्शन कहलाता है, राइट। उसमें कौन कौन से तरीके हैं, देखिए फिजिकल बैरियर मेथड है। फिजिकल बैरियर मेथड के अंदर क्या होगा, स्पर्म्स को और एग सेल्स को फिजिकल बैरियर की हेल्प से फ्यूज़ होने से रोकेंगे, राइट। In this method, sperm and egg cells are prevented to fuse with each other with the help of some physical barrier between them, like diaphragms, cervical caps, ठीक है, copper T, etc. All these are the physical barrier methods. Surgical methods are somewhat permanent, and it includes a सर्जरी, राइट। सर्जरी होने के बाद ही ये मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। वैसेक्टमी है, वैसेक्टमी में क्या होता है, वास डिफरेंस को काट के उसको टाई कर दिया जाता है, राइट। तो काट के टाई करने से क्या होगा, स्पर्म्स ही आएंगे नहीं, स्पर्म्स ही सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन से और प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन से नहीं मिलेंगे। इजैकुलेशन तो होगा, इजैकुलेशन से सीमेन भी आएगा, लेकिन सीमेन लैक करेगा किसमें, स्पर्म्स नहीं होंगे सीमेन के अंदर, सिर्फ सिक्रीशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड, ये होगा, राइट। और सर्जिकल मेथड्स में ट्यूबेक्टमी भी आती है। इट इज़ यूज्ड फॉर फीमेल्स। फैलोपियन ट्यूब को काट के टाई कर देते हैं, तो फैलोपियन ट्यूब में क्या होता है, एक्सेल या ओवम आता है रिलीज होके। तो जब वो टाई हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा वो पाथ या पासेज, तो क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में लैंड ही नहीं करेगा ओवरी से ओवम, राइट। ओव्यूलेशन होगा, लेकिन ओव्यूलेशन से ओवम फैलोपियन ट्यूब में नहीं आएगा, राइट। तो इससे क्या होगा, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं हो पाएगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो केमिकल मेथड्स या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स क्या होती हैं, ठीक है। हार्मोनल बैलेंस के अंदर चेंजेस लाके क्या करते हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। सो द चेंजेस द हार्मोनल बैलेंस टू चेक द egg release in females. Oral contraceptives cause side effects, right. Healthy society needs a balanced sex ratio that can be achieved by educating the people to avoid malpractices like female feticide and prenatal sex determination. Sexual transmitted diseases like STDs, HIV, AIDS, bacterial STDs like syphilis and gonorrhea are communicated during unsafe sexual contact. So these are the diseases which can be caused by a unsafe sexual contact. Unsafe sexual contact meaning without any protection, right. So these diseases can be
can be achieved, or they can be acquired by a person if he or she just uh, do unprotected sex, just go for unprotected. So I think it's clear enough now. This is end of your chapter. This is the last part, and we'll start with the next chapter in next class. We will start another new chapter. So that's it for today. Thank you.